morning, everyone. Brian Newman with Gomark Avalanche Center and the Gomark Ski Patrol. We're up here at 4,000 meters today. It is Tuesday, and Avalanche Mitigation has early on produced some very, very large results in the same weakness that we were describing in our previous video. Here within the ski area, you can see larger amount of snow sitting on top of that same strong crust near the ground. Below that, the persistent weak layer of those developed facets. Very dangerous avalanche conditions at the moment, with large destructive avalanches as the result. Light. Dispatch. Tower 14. Shot 2. Very low. Finds the hole. Tower 14? Shot 2. Very, very low. जो खबर हुई है तो क्या था ये एक्चुअली हम पिछले 3 दिन से यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्नो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। तो हमारा प्लान था, हमारा प्रोग्राम था आज ही कि हम माउंट अफरवट पे जाए, वहाँ एवलांच मिटिगेशन करें। तो ड्यूरिंग एवलांच मिटिगेशन कुछ बड़ा ही रिजल्ट आया है, D3 D4 एवलांच आया है। तो हम चाहते हैं कि हम स्लोप्स जो है ना सेफ़ रखें स्कीयरों के लिए। जो भी स्कीयर यहाँ आए उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो।